So in today's lecture, we are going to study the internal characteristics or internal structure of human heart. So once again, welcome. सर्वांचं स्वागत आहे किरण कोलते बायोलॉजी अकॅडमी ह्या आपल्या लोकप्रिय लोकप्रिय करायची जबाबदारी तुमची आहे. तर लोकप्रिय यूट्यूब चॅनल मध्ये जिथे तुम्हाला मिळतील नवनवीन व्हिडिओ रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ 11th and 12th बायोलॉजी. चलो, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो इंटरनली ऑल्सो ह्यूमन हार्ट जो हमने कल देखा था, द ह्यूमन हार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स, उसमें से दो क्या है, 2 अपर स्मॉल साइज चेंबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, एट्रिया. तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट 2 एट्रिया एंड 2 डाउन साइड लार्ज साइज चेंबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, वेंट्रिकल. तो थोड़ा सा रिवीजन ले लेते. एट्रिया आर स्मॉल साइज and they are concerned with what, they are mainly concerned with receiving, they receive the blood from the different part of body, whereas ventricles are large in size and they are distributing, these are the distributing chambers, they are mainly concerned with the distribution of blood. Now first of all I'll tell you how to draw the internal structure of heart, that VS of heart diagram. Students are finding too much difficulty, विद्यार्थ्यांना खूप अवघड वाटतं की how to draw the diagram of VS of heart. तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट, तो इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग हाउ टू ड्रॉ द VS ऑफ हार्ट. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ 2C और ब्रैकेट फ्रॉम द टू साइड्स. ये ऐसे बनाना है. एंड द हार्ट, यस्टरडे ओनली आई टोल्ड यू कि हार्ट इज अ ब्रॉड टुवर्ड्स द बेस एंड कोनिकल नैरो अपेक्स व्हिच इज अ टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. तो इमेजिन करो ये अपना क्या है, लेफ्ट साइड. दिस वन इज योर लेफ्ट साइड. तो हमको क्या करना है, नैरो अपेक्स बनाना है इन दिस शेप. तो ये ऐसे, ज्यादा ही कोनिकल नहीं बनाना है, ट्रायंगुलर पॉइंटेड. तो ये हो गया, समझ में आ गया. तो स्टिल इट इज अ पेन टैब, देयरफॉर ब्लैक बोर्ड पे और अच्छा आता है. तो these two are what, atria. Now we have to show the inner lining of these two chamber, all 4 chambers. So here is the, and inner lining of ventricle, it is not even, it is thrown into some series of projection. So there are many ridges or projections are present on the inner lining of ventricle. तो they are called as what, उसको क्या कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे. तो ये हो गया अपना. I'll change the color, wait 1 minute. तो let it be, कलर वही रखते हैं. तो here this is the one wall, here is the second wall, and here is your pulmonary artery which is arising from the top side of right ventricle. तो ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है. राइट वेंट्रिकल के ऊपर से ये तुम्हारा क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी अराइज हो रहा है. देखो इट इज अ टू मच इजी. तो ओनली 2 to 3 minutes आर सफिशिएंट टू ड्रॉ दिस डायग्राम. 2 to 3 minutes बच्चों. स्टूडेंट्स आर थिंकिंग इट इज बहुत डिफिकल्ट टास्क है बाबा ये तो, बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. सी our diagram has get completed. So these are the, this one is the precaval vein, here downside post caval vein. Here you show 2 pulmonary veins coming from left side and 2 pulmonary veins coming from right side. हो गया diagram. तो अभी now I have to change the color to show the other details. I'll take a which one, हाँ चलो we'll take a blue one. So this is the opening for precaval vein, this is the opening for post caval vein, and this is the opening for coronary sinus. तो ये क्या है, opening for coronary sinus, opening for coronary sinus. तो first we'll opening for coronary sinus. This one is the opening for what, opening for post caval vein, post caval vein, and this one is the opening for precaval vein, opening for precaval vein. These are the pulmonary veins. This one is the pulmonary artery. This one is the systemic aorta. ये क्या है. Now once again I'll change the color. Why? Because now I have to show the oxygenated blood, and for the oxygenated blood we have to use a red color. So for that, here in the left atria 4 openings are there. Those who are for the 4 pulmonary veins, they are bringing oxygenated blood. See, इनकमिंग एरोज दे आर शोइंग व्हाट, ओपनिंग फॉर पल्मोनरी वेन्स. एंड ये अपना है लेफ्ट एट्रिया. लेफ्ट एट्रिया के नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड बिलो द राइट एट्रिया, ये अपना क्या है, राइट एट्रिया है.
and below the right atria, right ventricle is present. और ये क्या है? The septum which is present between the two ventricle, that is called as interventricular septum. Interventricular septum. तो अभी देखो ये once again will change the color to show the semilunar valves. Semilunar valves के लिए लेते हैं हम डार्क ब्लू कलर. तो ये है semilunar valve which is present at the opening of systemic aorta and pulmonary artery. समझ में आ रहा है? तो इधर है. This is the position for semilunar valve. Semilunar valve. पहले लेवल समझ में लो, बाद में we'll start with the actual description. And this is the position for a bicuspid valve. It is called as mitral valve. Bicuspid valve. और ये क्या है? The valve which is present at the junction of right atria and right ventricle. उसको कहते हैं tricuspid valve. And these are series of projections. Those are present on the inner lining of a ventricle. They are called as what? Columni crani और trabecally crani. समझ में आ रहा है? Columni crani और trabecally crani. This is the diagram of a VS of a heart. Now we'll see in detail about VS of heart. Now I'll show you the one more diagram that I brought for you. So this is a picture which is showing in detail about the internal morphology of a human heart. Human heart is divided into 4 chambers. So upper 2 are called as a atria. These are the small size. So ये right atria and this one is the left atria. Atria are smaller than the ventricles. Ventricles are larger in size as compared to atria. Atria क्या कर रहे हैं? Atria receive blood from the different part of body. First we start with the right atria. Right atria से start करते हैं. तो देखो right atria क्या है? Right atria receive a deoxygenated blood from a superior vena cava and deoxygenated blood from the lower side of body from the inferior vena cava. Plus one more opening is there, that is for coronary sinus. So right atria receive deoxygenated blood from the upper side of body through superior vena cava, from the lower side of body through inferior vena cava, and from the wall of heart from coronary veins through this coronary sinus. So this is the opening for coronary sinus. इधर से क्या आएगा? हार्ट वॉल से जो इम्प्योर ब्लड है ये इधर से बाहर आएगा. किधर? राइट एट्रियम. बॉडी के ऊपर से जो आ रहा है हेड से, नेक से, शोल्डर से, तो दैट इम्प्योर ब्लड इज कमिंग थ्रू सुपेरियर वेना कैवा. एंड बॉडी के नीचे से एब्डोमेन से, लोअर लिम्ब से जो ब्लड आ रहा है इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड व्हिच इज कमिंग थ्रू दिस इंफेरियर और पोस्ट कैवल वेन. द ओपनिंग ऑफ इंफेरियर और पोस्ट कैवल वेन, तो ये वाला ओपनिंग, इट इज गार्डेड बाय ईस्टर्न वाल्व. इसके पास कौन सा वाल्व है? Eastern valve. Whereas the opening of coronary sinus, it is guarded by Thebestian valve. But no such valve is present at the opening of superior vena cava. Why? Because the blood is not going to move again towards the upper side, opposite to gravity. Blood ऊपर जाने वाला नहीं है. क्यों? It is not going against to that of gravity. So therefore here no any valve is present at the opening of superior vena cava inside in the right atria. तो right atria ने क्या किया? Right atria receive deoxygenated blood by means of 3 different openings, one for superior vena cava, one for inferior vena cava and one for coronary sinus. अभी इधर चलते थोड़ा सा. Left atria. Left atria receive oxygenated blood from what? From pulmonary veins. Pulmonary veins का काम क्या है? They are bringing oxygenated blood from both the lungs. So these are the 2 openings for right pulmonary veins and these are the 2 openings for left pulmonary veins. So they are bringing what? Oxygenated blood. Here I use a purposely red color to show the oxygenated blood. So pulmonary veins, these are the pulmonary veins. So this is the pulmonary veins. They are coming from left side and these 2 are coming from the right side. ये भी क्या है? Pulmonary veins है. So 4 pulmonary veins they open inside in the right atria and they bring oxygenated blood to the left atria. समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट एट्रिया क्या कर रहे हैं? लेफ्ट एट्रिया रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? लेफ्ट एट्रिया. एंड बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? राइट एट्रिया. बोथ दिस एट्रिया आर सेपरेटेड. तो बिलो दिस, इट इज नॉट विजिबल इन दिस डायग्राम, बट बिलो दिस पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एरोटा. ये जो है ये सिस्टमिक एरोटा है एंड दिस वन इज द पल्मोनरी आर्टरी. तो इसके नीचे क्या है? इन बिटवीन दीज 2 एट्रिया there is
वर्टिकल वॉल इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरएट्रियल सेप्टम। उसको क्या कहा है? इंटरएट्रियल सेप्टम। जो फोसा ओवलिस है, जो मैंने कल बताया था, फोसा ओवलिस क्या है? द फोसा ओवलिस, तो ओवल शेप्ड डिप्रेस्ड रीजन विच इज प्रेजेंट इन द इंटरएट्रियल सेप्टम, दैट इज द, वो जो है डिप्रेस्ड रीजन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोसा ओवलिस। अंडरस्टूड? तो ये फोसा ओवलिस किधर है? इन द इंटरएट्रियल सेप्टम। तो दिस इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट दिस राइट एंड लेफ्ट एट्रिया फ्रॉम ईच अदर। ये अब तक कुछ डाउट डिफिकल्टी? चलो आगे चलते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द वेंट्रिकल्स। तो राइट एट्रिया ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल and left atria open into the left ventricle. Below the both atria, two large size distributing chambers are there. One is the right ventricle and one is the left ventricle. Left ventricle is somewhat larger in size and it is too much thicker as compared to the right ventricle. अगर right ventricle का wall देखते हो तो ये क्या है? narrow है, थोड़ा सा कम है thickness में. But left ventricle का wall क्या है? It is much more thicker. Why? Because left ventricle has to pump blood with a great pressure towards the different part of body, and therefore the wall of left ventricle is much more thicker as compared to the wall of right ventricle. Now both these atria, ये जो दोनों atria है, they open inside in the downside chamber by means of a small opening. So this is the one opening present between right atria and right ventricle, and this is the second opening present between left atria and left ventricle. उसको क्या कहा है? This is, that is called as what? That opening is called as atrioventricular aperture. Atrioventricular aperture. Aperture means what? Pore or opening present between atria and ventricle. तो ये जो the atrioventricular aperture which is present between left atria and left ventricle, that aperture is guarded by one special type of wall that is called as a bicuspid or mitral wall. इसको bicuspid नहीं तो क्या कहते हैं? Mitral wall कहते हैं. Why? Why the name mitral? That I already tell you in the yesterday's lecture. तो bicuspid क्यों कहते हैं? Because this wall which prevent the backflow of blood from ventricle back to atria. तो ये जो bicuspid wall है, it is provided with the two flaps of connective tissue. इसके पास क्या है? Two flaps है, किसके? Connective tissue के. It is made up of two flaps of connective tissue. Whereas the wall which is present at the atrioventricular aperture in between a right atria and right ventricle, it is guarded by tricuspid wall. Means this white is called as tricuspid because it is having cuspa means what? Layer, and tri means what? Three layers. Three layers of connective tissue. Here also bicuspid. Bi means what? Two, and cuspa means what? Layer. So two layers are there, therefore a bicuspid, and here three layers are there, therefore a tricuspid. तो ये bicuspid tricuspid wall क्या करते हैं? They are preventing the backflow of blood from ventricle back to atria. अभी ये जो edges है, the edges of these walls, they are connected to the papillary muscles, those are present in the wall of ventricle. तो ventricle के wall में क्या है? Special type of muscles are there. तो ये now here I had shown in a red color. तो ये क्या है? Papillary muscles है. What is the location of papillary muscle? इसके ऊपर MCQ बन सकता है. तो papillary muscle का location है, it is they are present in the wall of ventricle. तो these edges of these walls are connected to the papillary muscle with the help of a thread like structure. तो ये जो सफेद कलर के दिख रहे हैं इधर, व्हाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, those who are connecting the walls with the papillary muscles, they are called as chordae tendineae. इसको नाम क्या है? chordae tendineae. तो chordae tendineae का फंक्शन क्या है? chordae tendineae are act as stopper. जैसे दरवाजा आपल्या स्टॉपर असतं, our doors are provided with what? stoppers. तो स्टॉपर क्या कर रहा है? स्टॉपर preventing the what? reverse opening or irregular opening and closing of a door. So like that, these chordae tendineae, they are also act as the stopper. They prevent the reverse opening of these valves back into the atria. तो ये atria में उल्टे खुल न जाए, इसको ये होने से कौन रोकता है? तो these chordae tendineae, they are preventing the reverse opening of these valves back into the atria, and by this way they are preventing the backflow of blood from ventricle back into the atria. तो ये कौन prevent कर रहा है? तो these valves along with these chordae tendineae. अब तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते. तो the inner lining of ventricle, it is thrown into some series of projection, or it consists some series of projection. So those irregular projections, those are present from the inner side of a ventricle, they are called as what?
columni cranny. They are called as what? Columni cranny or trabecally cranny. Is this clear? तो it is not even or straight. समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया के पास क्या है? Both the chambers are provided with the oxygenated blood, and right atria and right ventricle they are provided with the what? Deoxygenated blood. Now from the top side of a ventricle, both the ventricle. अभी क्लियर क्या देखना है हमको? अभी इधर देखना है. From the top side of right ventricle के top side ये है. तो from the top side of right ventricle, the one large size blood vessel has get arise. That is called as what? Pulmonary artery. So this pulmonary artery take deoxygenated blood towards the lungs for what? Oxygenation from this right ventricle. Same from the left ventricle, from the top side of left ventricle, one large size blood vessel has get arise. That is called as systemic aorta. उसको क्या नाम है? Systemic, AORTA. Don't make a mistake in the spelling of aorta. AORTA. Systemic aorta. ये क्या कर रहा है? It take oxygenated blood from left ventricle towards the different part of body. तो systemic aorta का function क्या है? It carry blood, oxygenated blood from left ventricle towards the different part of body, whereas the pulmonary artery carry deoxygenated blood from the right ventricle towards the different part of body. Both these are pulmonary artery and pulmonary artery and systemic aorta. The opening of both these pulmonary artery and systemic aorta, they are guarded by means of a special type of valves. Those who are half moon shape. है क्या नहीं? Half moon shape. So these are half moon shape valves. Those who are present at the junction or opening of these pulmonary artery and ventricle, systemic aorta and ventricle, they are called as what? Semilunar valve. उसको क्या कहा है? Semilunar valve. Why? Because semilunar, because they are half moon shape. उनका शेप कैसे है? हाफ मून शेप है. Same valves are present in veins also. तो वेन्स जो है, वेन्स आर प्रोवाइडेड विद वाल्व्स, वेरास आर्टरी में वाल्व्स होते नहीं है. तो वेन में भी कौन से वाल्व होते? टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, सेमील्यूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट इन veins. Is this clear? Now we'll go back on our theoretical slide. तो उसमें कुछ बाकी है क्या? That we'll see. If you are having any doubt, difficulty, then definitely you put your comment in a comment box. तो देखो, important point that I brought for you already. All the important points are highlighted here. तो देखो, internal structure of heart. The internal structure of heart consists two atria, two ventricles. Atria क्या है? Distributing chambers है. And ventricles क्या? Sorry, atria क्या है? I was just checking that you are paying attention. Atria क्या है? Wait 1 minute. I have to plug a charger. Atria are what? Atria are the receiving chambers, and ventricles are the distributing chambers. So two atria. What is the difference between atria and ventricle? Atria are too small. They are small size and thin wall, whereas ventricles are large size and thick wall. Both the atria are separated from each other by means of an interatrial septum. त्यांच्यामध्ये असलेला सेप्टम जो आहे, राइट एट्रिया आणि लेफ्ट एट्रिया यांच्यामध्ये जी क्रॉस वॉल आहे, दैट इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. तो राइट एट्रिया क्या कर रही है? राइट एट्रिया रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय मींस ऑफ 3 डिफरेंट ओपनिंग्स, प्री कैवल वेन, पोस्ट कैवल वेन एंड करोनरी साइनस. समझे? देखो, प्री कैवल वेन को नाम दिया है सुपेरियर वेना कैवा. दिस इज द प्री कैवल वेनचं नाव काय? सुपेरियर वेना कैवा. पोस्ट कैवल वेनचं नाव आहे इन्फेरियर वेना कैवा. आणि करोनरी साइनस, it is the opening from which coronary veins they open inside in the right atria. तो तीनों में से क्या आ रहा है? deoxygenated blood आ रहा है from the all different part of body. तो right atria receive deoxygenated blood. The inferior vena cava, जी खालच्या बाजूने inferior vena cava येती है, that opening, the opening of that inferior vena cava is guarded by ischian wall. तो कौन सा वाल्व है? ischian. इसके ऊपर MCQ बन सकता है बच्चों. And wall which is present at the opening of coronary sinus, that is called as Thebestian wall. तो ये दो नाम याद रखो, ischian and Thebestian wall. इसके ऊपर क्या आ सकता है? MCQ आ सकता है. तो दो वाल्व है, देखो, ये राइट एट्रिया अपना, नीचे है प्री कैवल वेन का पोस्ट कैवल वेन का ओपनिंग, ये प्री कैवल वेन का ओपनिंग है, दिस इज द करोनरी साइनस. तो ऊपर तो कोई वाल्व नहीं है, बट हियर E and here T. Like this you have to remember. E stand for ischian. E किधर है? नीचे. और T किधर है? बीच में. तो T stand for Thebestian. Thebestian is present at the opening of coronary sinus.
ईस्टर्न इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल वे. तो आई क्लियर ऑल दीज थिंग्स. व्हाई? बिकॉज बाद में नॉट क्रिएट प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू कीप दिस डायग्राम. तो देखो नेक्स्ट क्या है, ऑल दिस थिंग वी ऑलरेडी कवर. तो देखो ओवल डिप्रेशन, ओवल जो डिप्रेशन दैट आई टोल्ड यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू atria at the interatrial septum, that is called as what? Fossa ovalis. तो fossa ovalis क्या है? It is the remnant of foramen ovale. तो जेव्हा त्या बाळाचं हृदय, जेव्हा इफ यू सी द हार्ट ऑफ फिटस, तो फिटस का हार्ट जो रहता है उसमें दोनों एट्रिया क्या है? दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर by means of an one opening, that is called as what? Foramen ovale. And later on that opening has get a close. तो उसका जो डिप्रेशन remnant रह जाता है, ट्रेस मार्क, so that is called as what? Fossa ovalis. So fossa ovalis is the remnant of foramen ovale of the heart of fetus. Left atria ने रिसीव क्या किया? ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव किया from 4 different pulmonary veins. तो pulmonary veins क्या कर रहे हैं? They are bringing the oxygenated blood from lungs. lungs कडून या काय करतात? ऑक्सीनेटेड ब्लड घेऊन येतात. Both the atria open into the round side chamber by means of an opening that is called as atrioventricular aperture. aperture म्हणजे काय? छिद्र आहे. तो एट्रिया आणि वेंट्रिकल यांच्यामध्ये छिद्र आहे, दॅट इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकल अपर्चर. द राइट एट्रियोवेंट्रिकल अपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइक्युस्पिड वॉल व्हिच इज प्रोवाइडेड विथ 3 फ्लैप्स. व्हाई ट्राइक्युस्पिड? बिकॉज 3 फ्लैप्स है. एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय बाइक्युस्पिड वॉल. व्हाई बाइक्युस्पिड? बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विथ 2 फ्लैप्स. इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल because the shape of this wall is same like to that of the shape of one father, that is a bishop mitre. So therefore it is called as what? Mitral wall. We'll proceed on the next slide. The atrioventricular wall which is present between the left atria and left ventricle, it is guarded by mitral wall or bicuspid wall that just now I told. And the edges of these walls are connected to the papillary muscle with the help of thread like structure called as chordae tendineae. chordae tendineae काय? थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स. काय मित्रांनो? थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स म्हणजे धागे जे एक प्रकारे स्टॉपर सारखं काम करतात. दे आर प्रिव्हेंट द रिव्हर्स ओपनिंग और दे प्रिव्हेंट walls from turning back into the atria. Means they prevent the reverse opening of these walls back into the atria, and they prevent the backflow of blood from ventricle back into the atria during a ventricular contraction. जेव्हा ventricle contract होतील तेव्हा ह्या walls ला बंद ठेवण्याचं काम कोण करणार आहे? तर these chordae tendineae, they are keeping these walls close to prevent the backflow of blood from ventricle back into the atria. तो ventricles क्या है? देखो आगे चलते हैं. Ventricles are 2 thick wall distributing chambers. They are separated from each other by means of an what? By means of an interventricular septum. तो ये है interventricular septum. समझ में आ गया? Left ventricle is much more thicker than the right ventricle. Why? तो इसके ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. बिकॉज left ventricle has to pump blood with a great force to the different part of the body. समझ में आ गया? From the position of pulmonary artery, it is arising from the top side of right ventricle. right ventricle के top side से ये pulmonary artery arise हो रहे हैं, which is carrying deoxygenated blood towards the lungs for purification. Systemic aorta is arising from the top side of left ventricle. It carry oxygenated blood towards the different part of body. Is this correct? Both the opening of systemic aorta and pulmonary artery is guarded by semilunar wall. And why the name semilunar? Because they are half moon shape wall. उसका shape क्या है? half moon shape है. Therefore they are called as semilunar wall. Is this correct? चलो आगे चलते हैं. तो once again this is the diagram and how to draw that diagram within 2 or 3 minutes that I'll show you here. तो definitely in journal, अगर जर्नल में डायग्राम बनाना है तो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. इज दिस क्लियर? तो अगर कोई डाउट डिफिकल्टी है तो डेफिनेटली पुट योर क्वेरीज और प्रॉब्लम्स इन अ कमेंट बॉक्स. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग. तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस वेयर आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ 11th and 12th. तो स्टिल आई डिडंट स्टार्टेड विद द 11th. व्हाई? बिकॉज when the college will get open in this next or 1-2 months, definitely from that time I'll start teaching 11th syllabus also. And one good news that each and everyone got that our government reduced the 25% syllabus for this academic year. या वर्षी 25% syllabus कमी केलाय for both 11th and 12th, starting from 1 to 12th. पहिली पासून 12वी पर्यंत त्यांनी सिलेबस चेंज केलेला आहे.
So whatever updates that I am getting from the DYD as well as from board, that each and every update you will get through our channel along with the routine educational videos. So please subscribe our YouTube channel for getting more educational videos with those